Hello all. Today we will discuss the topic of gift, Muslim law of gift. Gift being the transfer of property is generally governed by TPA, that is Transfer of Property Act. Transfer of Property, that is governed by Transfer of Property Act 1882. But there's Chapter 7 in TPA, which says that this chapter does not apply to Muslim. That is, it means the gift under the TPA, provision of gift under the TPA does not apply on the Muslim. The reason is that although there is no difference in the gift made by the non-Muslim and hiba in for as the basic nature is concerned, yet formalities of the hiba are different from that of the gift made by the non-Muslim. In hiba transferor intends to transfer the property immediately to the transferee, unlike the situation under the TPA Act. Hiba is operative with immediate effect and devests the donor of his control and ownership of the property. Next, what is hiba? Definition of hiba. Hiba or simple gift is the disposition inter vivos, that is between the living person. Literally means the donation of the thing from which the donee may derive benefit. And as per Hidayah, hiba is an unconditional transfer of ownership of an existing property made immediately without consideration. If we see this definition, then we can find out the essential of this definition from here. Hiba is unconditional gift. Hiba, there could not be any condition on when you are gifting your property to someone under the Muslim law. That must be unconditional, कोई condition नहीं होनी चाहिए. Secondly, transfer of ownership का transfer होना चाहिए, तभी हिबा होगा, otherwise नहीं. तीसरा, existing property existing में होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि property future property को हम gift करना चाह रहे हो, तो property must be existing property. Made immediately without the consideration. Gift is without consideration. Hiba is also without consideration. So this is definition of hiba as per Hidayah. Plus one more thing which is essential for a gift, that is accepted by the donee. When donor is making the gift, then gift must be accepted by the donee. This is an essential condition. Let us see the essential requisite of a gift. First is who may gift. गिफ्ट कौन कर सकता है? गिफ्ट करने के लिए फर्स्टली द पर्सन मस्ट बी मेजर. एक मेजर पर्सन ही गिफ्ट कर सकता है. सेकेंडली ही मस्ट बी साउंड वाइज. Thirdly, he must have the ownership over the property to be transferred by way of gift. पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड मैन होना चाहिए और वो खुद ओनर होना चाहिए जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है. Last one more thing is must be free of fraudulent or coercive influence. The person who is gifting donor पे कोई भी fraudulent या coercive influence नहीं होना चाहिए. Last point is intentional or voluntarily. So who may gift? गिफ्ट कौन कर सकता है? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, खुद ओनर होना चाहिए जो वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता है उसका. मस्ट बी, और वो जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है वो किसी इन्फ्लुएंस में या फ्रॉड में या कोर्सिव में कोर्स ना अपना गिफ्ट कर रहा हो. नेक्स्ट, वॉलेंटरली कर रहा हो. One more thing I want to tell to you, the burden of proof that gift is not induced by undue influence is on the donee. Next is that who may receive gift. कोई भी पर्सन गिफ्ट ले लेगा या is there any qualification for that? डोनी मतलब who may receive, डोनी कौन होना चाहिए? Any person capable of holding the property can be a donee or can receive a gift. Second, that person must be in existence at the time of making the gift. As gift to unborn person or dead person is void. तो receive कौन कर सकता है gift? Firstly, capable of holding the property. Secondly, the person must be existence. Existence में मतलब unborn को नहीं दिया जा सकता और
dead person को, if it is given, then it will void. But child in the mother womb is the competent donee if born alive within the 6 month of the date on which gift is made. Again, I am telling you, gift, who may receive the gift? One, the person must be capable of holding the property. Second, he must be in existing, that is not to unborn or dead person, but a child in the mother womb, if born alive within 6 months of the gift, then gift can be made to him or her. Next essential is प्रॉपर्टी और राइट विच में बी गिफ्टेड, किस तरह की प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है. नंबर 1, प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ गिफ्ट. एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए. आप फ्यूचर प्रॉपर्टी, यू कांट गिव द फ्यूचर प्रॉपर्टी. सब्जेक्ट मैटर जो गिफ्ट का है, इट मे बी मूवेबल, इट मे बी इमूवेबल, इट मे बी कॉर्पोरल और इट मे बी इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, a gift will not valid without the delivery of possession. So delivery of possession is essential, also essential thing for the gift. Therefore, a Muslim can't make a gift of services. क्योंकि डिलीवरी का पोजीशन जरूर चाहिए, सर्विसेज का गिफ्ट मोमडन में अलाउ नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ डोनर राइट टू गिफ्ट. Owner power is unrestricted, but one exception is there, gift made during the death illness, जिसको मैंने I have already discussed in the class, मर्जुल मौत. Otherwise, gifting rights is unrestricted. Next, फॉर्मेलिटीज एंड मोड ऑफ गिफ्ट. क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी गिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए. द एक्ट ऑफ मेकिंग ए गिफ्ट शुड fulfill the 3 conditions. One is, first is declaration by the donor. We will discuss in detail later. First is declaration by the donor that he or she is gifting the property. Second, acceptance by the donee. Third is delivery of possession by the donor and taking by the donee. कि डोनर ने पोजीशन दिया हो और डोनी ने पोजीशन लिया हो, तो डिलीवरी होनी चाहिए गिफ्ट में. तो देयर आर main 3 formality: declaration by the donor that I am gifting this property, and second is acceptance by the donee, the donee is accepting the gift unconditionally. Acceptance must be unconditional. Third is delivery of the possession, जो property declare की जा रही है उसकी delivery होनी चाहिए. One landmark judgment is here about the oral gift. The landmark case is, sorry for disturbance. A landmark case is there, that is Mehboob Sahab versus Sayyid Ismaili, AIR 1995, Supreme Court, page number 1205. It says that oral gift is as effective in the writing as the written gift, but express of intention of divesting the ownership must be there. So in this case, it is clear that oral gift is also effective, but there must be intention of divesting the ownership. Next is next and first I am telling you in details. Declaration of the gift is a statement which signifies the intention of the transferor that he intends to make a gift to donee. There must be clear and unambiguous intention of the donor to make the gift, bona fide intention to divest himself in the present of his or her property or his title in the property gifted. So there must be clear-cut declaration that he is ready to make the gift voluntarily, and he is. Next is one more thing I want to tell you, that this declaration may be in the present of witness, or a public statement may be made regarding the declaration. Next is acceptance. The donee himself can accept the gift, or the gift can be accepted on his behalf. Next is delivery of the possession.
This is called seisin, S-E-I-S-I-N. This seisin word, please keep in mind, it may be 1 mark question in the competitive exam. What is delivery of possession said? That is seisin, S-E-I-S-I-N. So there must be delivery of the possession. The gift take effect from the date on which possession of property is delivered to the donee, not from the date on which declaration is made. So I hope it is clear to you that gift is effective from the date when possession is delivered, not from the date of declaration. Some important point I'd also discuss for the delivery. To validate the gift, there must be delivery of the possession. Following such delivery, some overact by the donor to put it with the power of donee to obtain the possession. अगर डिलीवरी दी है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ क्लियर का डिलीवरी ना हो तो कुछ ऐसा क्यों हो कि पोजीशन देने के लिए कुछ कर दियो. फॉर एग्जांपल, अगर आपने हाउस नहीं दी है बट हाउस की दे दी है उनको डोनी को, तो इट इज एज अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन गिवन, राइट. एंड ए डोनी इज जस्ट अ मिनट. एक डोनी पोजीशन में कब कहा जाएगा डिलीवरी के? व्हेन इज सो प्लीज, व्हेन विद रेफरेंस टू it, that is property, that he can exercise the exclusive control over it for the purpose of delivery from it such benefit as it is capable of rendering it or as is usually derived from it. Now, one more thing that I want to tell you. Possession may be actual, constructive, or symbolic. Delivery of possession immediately, otherwise hiba will be imperfect. Only such possession need to be transferred as the subject of the gift is susceptible of. Example, tenant in possession, just inform him about the change of the ownership. Actual I want to discuss it. Actual, when you are actually giving the property, owner property title, that is called actual. Construction, when you are giving the key of the house which you want to transfer, so that is called constructive. Last is symbolic. For example, someone have the property in your behalf. A person have a godown, and in godown he is having some property, but some other person bought that material which is in his godown, although no possession given to that person, but it is informed by the storekeeper that he is holding the possession for that donee. This is called as symbolic. Okay. Next point is when delivery of the possession is complete. And here there is a difference for the movable property and immovable property. When the property is movable, firstly I'm discussing about the immovable property. Then जब movable property physically transfer कर दी जाती है donee को, then it is called delivery of possession complete. In immovable property, there are two theories, and that two theories, one is benefit theory and other is intentional theory. In benefit theory, as the name suggests, first construction delivery of the possession complete as soon as the donee starts getting the benefit out of gifted property. That is benefit theory. Real test is from which date the donee is reaping the benefit. For example, one example I want to discuss in this about the benefit theory. जब डोनी आपने कोई प्रॉपर्टी दी है और आपकी इंटेंशन है कि डोनी उसका रेंट ले ले, प्रॉपर्टी का ओनली बेनिफिट रिसीव करे, रेंट, तो प्रॉपर्टी सेट ऑफ डिलीवर व्हेन इज रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ rent of that property, right? Next is intentional theory. The delivery of property complete when the donor intends to transfer.
Possession to the donee called the intentional theory. In this situation, the possession to the donee is called the intentional theory. Intention to prove from the facts etc. of the cases. इंटेंशन आप वहां से देखेंगे, केस के फैक्ट से देखेंगे कब इंटेंशन है मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा इंटेंशन कब से ट्रांसफर करने के। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। When the delivery of possession not necessary, अभी हमने कहा डिलीवरी इज एन एसेंशियल कंडीशन। एक बात और, who may challenge the delivery of the possession? कौन कौन चैलेंज कर सकता है? डोनर चैलेंज कर सकता है, डोनी और द पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। ये तीन पर्सन हैं जो डिलीवरी को चैलेंज कर सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ पोजीशन वन नॉट नेसेसरी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें डिलीवरी पोजीशन देना जरूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट बाय द फादर टू हिज माइनर सन और डॉटर और बाय गार्डियन टू दिस वर्ड, बिकॉज वो ऑलमोस्ट सेम हाउस में रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है उस केस में पोजीशन देना। सेकेंड इज गिफ्ट बाय द हस्बैंड टू द वाइफ और वाइस वर्सा, दैट इज वाइफ हस्बैंड को करे या हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करे, तो उसमें डिलीवरी ऑफ द पोजीशन जरूरी नहीं है। थर्ड केस, डोनर और डोनी रिजाइडिंग इन द सेम हाउस, सेम घर में रह रहे हैं, वहां भी पोजीशन देना, डिलीवरी ऑफ पोजीशन जरूरी नहीं है। फोर्थ इज वेयर डोनी ऑलरेडी इन द पोजीशन, पहली पोजीशन में है तो उसको पोजीशन नहीं भी दिया, डिलीवरी नहीं किया अपने पोजीशन में, स्टिल इट इज अ वैलिड गिफ्ट। लास्ट वन इज गिफ्ट बाय वन को शेयरर टू अदर। एक हाउस है, उसके दो शेयर है, को शेयरर है या तीन है, तो एक को शेयरर दूसरे को शेयरर को प्रॉपर्टी दे देता है, तो वहां पर डिलीवरी ऑफ पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज वर्ड गिफ्ट। वर्ड गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट टू अनबोर्न पर्सन, मैंने आपको पहले बताया, दैट इज वर्ड। गिफ्ट टू डेड पर्सन, दैट इज वर्ड। कंटीजेंट गिफ्ट, कंफर्म नहीं है कि गिफ्ट होगा या नहीं होगा, कंटीजेंट दैट इज डिपेंड अपॉन द सम कंडीशंस व्हिच इज कंटीजेंट, तो कंटीजेंट गिफ्ट इज वर्ड। नेक्स्ट है गिफ्ट विद द कंडीशन और एंड दैट कंडीशन इज वर्ड, सो गिफ्ट इज आल्सो। So these are the words of which I have told you. Next, an important topic is revocation of gift. Hiba, once validly made, is generally irrevocable. Before the delivery of possession, the gift is not complete, and doer has unrestricted right to revoke it. Generally, आप इसको revoke नहीं कर सकते। एक बार अगर हो गया, validly made कर दिया आपने हिबा या गिफ्ट, then it is irrevocable. But as you know, जैसे कि आपको पता है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन एसेंशियल कंडीशन है गिफ्ट की। अगर डिलीवरी पूरी नहीं होती तो उससे पहले डोनर हैव राइट, अनरेस्ट्रिक्टेड राइट टू revoke it, and once the delivery of possession is complete, then donor has no right to revoke the proof generally. But there are two conditions जहां पे डिलीवरी पोजीशन की डिलीवरी होने के बाद भी गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। नंबर वन, विद द कंसेंट ऑफ द डोनी। नंबर टू, बाय फॉर्मल डिग्री ऑफ द कोर्ट। ठीक है, मैं ये पॉइंट दोबारा डिस्कस करती हूँ। रेवोकेशन ऑफ द गिफ्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन फॉर द जुडिशरी। वंस आपने अगर एक बार गिफ्ट कर दिया, दैट जनरली इट इज इररिवोकेबल, बट यू नो द डिलीवरी ऑफ पोजीशन एसेंशियल कंडीशन। अगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उससे पहले डोनर अपना गिफ्ट रिवोक कर सकता है, और अगर एक बार डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया तो उसके बाद सिर्फ दो तरह से ही गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है। वन, दोनों के कंसेंट से, दूसरा कोर्ट के डिग्री से। कुछ गिफ्ट्स हैं जो एब्सोल्युटली इररिवोकेबल हैं, जिनको आप रिवोक नहीं कर सकते। व्हेन डोनर और डोनी डेड, जब डोनर या डोनी किसी की डेथ हो चुकी है तो आप गिफ्ट जो पहले हुआ है उसको रिवोक नहीं कर सकते। दिस इज some situation where gifts is irrevocable. Second, when donor and donee related by the blood or marital relation,
अगर ब्लड रिलेशन है या मैटर रिलेशन है उनमें से, तो आप गिफ्ट को रिवोक नहीं कर पाएंगे. देन गिफ्ट इज एब्सोल्युटली इरिवोकेबल. थर्ड वन इज व्हेन गिफ्टेड प्रॉपर्टी इज sold or gift or is destroyed और चेंज, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की है वो सेल हो चुकी है, उसने पहले फर्दर सेल कर चुका पर्सन, या किसी और को गिफ्ट कर चुका है वो, और या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या उस इस तरह से चेंज हो चुकी है कि उसको उसके प्रीवियस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता. कहने का मतलब जिसको आपने गिफ्ट प्रॉपर्टी है उसके कंट्रोल से प्रॉपर्टी बाहर हो चुकी है, तो ऐसा गिफ्ट को आप रिवॉक नहीं कर सकता. नेक्स्ट, व्हेन द गिफ्ट इज सदका. सदका इज सेड SADAQAH. Sadaqah is a gift made for the religious purpose. When you made a property of the gift of the property for the religious purpose, then it is absolutely irrevocable gift और आप उसको revoke नहीं कर पाएंगे. In under mountain law, I'm telling you. When anything have been accepted in return, almost you have done almost topic on this. For you, one more thing, an addition question can come. What is the distinction between gift and will? So you can go through that. You can do yourself that point also. Thank you all.